All right, Ji. So switch on the recording and is the screen visible to you? So if it is a yes, then we start this lecture. Yes, sir. Visible. So this is the second part of our today's lecture. After the introduction, so we are now going a little deeper into our manufacturing automation or automation system. So we will be talking about some production system. We will be talking about automation principles and some strategies. So whatever we have talked about a little earlier in the earlier lecture, so we are going to go into a little deeper while we are dealing with this second part of the lecture. So again, इसमें भी कोई ऐसी अभी भी mathematics आज involve नहीं होगी. We will just be talking about some theories. So ये जो economic realities हैं कि the world is going towards globalization and world is outsourcing internationally. See what does it mean that let's see something is being made in America. It was being made in America, but now the plants are shifting. You see, there are so many plants of cars which are being set up in Pakistan. So आपने देखा कि होंडा का प्लांट भी हमारे पास लग गया, हमारे पास सुजुकी का प्लांट लग गया, हमारे पास अभी ये नई जो चाइनीज गाड़ियां आ रही हैं उनके प्लांट्स आ रहे हैं. सो क्या हो रहा है कि पीपल आर आउटसोर्सिंग. सो हर चीज खुद नहीं बना रहे, दे हैव स्टार्टेड आउटसोर्सिंग. तो इंटरनेशनल आउटसोर्सिंग भी हो रही है एंड लोकल आउटसोर्सिंग भी हो रही है. सो ये प्लांट्स दे आर बीइंग सेट अप एट डिफरेंट प्लेसेस. Companies जो हैं they specialize in manufacturing entire products, not just the parts. So they give contracts to other companies for part manufacturing. ठीक है, वही वाली बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करवा रही है. लाइक आई कैन गिव यू एन एग्जांपल दैट पाकिस्तान में गुजरांवाला में बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं विच आर मेकिंग पार्ट्स. ये रास्तगार इंडस्ट्रीज हैं इस्लामाबाद में, दे आर मेकिंग पार्ट्स फॉर करोला. सो यहाँ पे पार्ट्स बन के वो करोला के अंदर फिट हो रहे हैं. सो करोला के लिए या होंडा के लिए, टोयोटा वाले अपने पार्ट्स खुद नहीं बना रहे. दे हैव आउटसोर्सेस, they have outsourced their parts and people are making those parts for them. ठीक है. Then important चीज क्या है कि why would somebody outsource something? Number one, that person wants to reduce or that country or that company wants to reduce its own burden, but at the same time quality का product जो है वो लेना चाहेगा. So important thing is whenever you are outsourcing something to somebody, so you must ensure that the quality should be maintained. Otherwise what will happen, वो जो हम बात करते हैं ना कि ये जापानी मॉडल है और ये पाकिस्तानी मॉडल है, ये जापान असेंबल्ड है और ये पाकिस्तान असेंबल्ड है. Have you heard of these terms? ये जापान असेंबल्ड गाड़ी है और ये पाकिस्तान असेंबल्ड गाड़ी है. Yes, sir. तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल जो पाकिस्तान असेंबल्ड है यार इसकी तो क्वालिटी कुछ नहीं. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट मेंटेन दी क्वालिटी. ठीक है जी. These are some of the approaches and technologies जो कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रही है. सो सबसे पहले ऑटोमेशन, हम इसके बारे में काफ़ी सारी बात कर चुके हैं. सो हम अभी इसके बारे में मज़ीद कोई बात नहीं करेंगे यहाँ पे. सो मैं सिर्फ इसको टिक लगाता चला जाता हूँ. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑटोमेशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट मटेरियल हैंडलिंग, वी हैव टॉक्ड अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग. व्हाट इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग? सो flexible manufacturing is to compete in the low volume or high mix of product categories. So it means that you should be able to manufacture the products which are required in low volume, or if they are required in high mixed product categories. So your machine, your outfit should be able to manufacture this. So this is called flexible manufacturing. We will talk about flexible manufacturing in more details. ठीक है जी. Then quality programs, okay, we have not touched them. We have touched them very briefly, but not in detail. So what do we need to have? That we need to run our quality program to achieve a high quality, which is expected by the customer. If you don't give customer the quality, customer is not going to
buy your product. Okay? And then we have already talked about SIM. So what does the SIM do? It integrates the design, then production, logistics, and we have talked about a little more things also. So SIM we have already talked about. So this is a terminology which is called lean production. This is very important. And lean production means that we have to work more with fewer resources. So what does this mean? What does that mean? It means that doing more with less resources. Let me just put it here. So doing or delivering more while you have less resources. So this is called lean production. Lean production we are going to talk about in detail, और इस lean production के बारे में हम अगले अपने lectures के अंदर कुछ मज़ीद बात करेंगे. But as far as the knowledge until here is concerned, so you should have something in your mind that you need to produce more, you have to do more work while you have fewer resources. ठीक है जी? So is this okay until here? Shall I move forward? Shall I move forward? Please, somebody to respond. Yes, sir. Okay, that's good. Yes, So, sir. okay, so now we are going to talk about the production system. How do we define a production system? We have talked about earlier that क्या है define हमने किया था production system को, that it's a collection of people, equipment and procedures which are organized to accomplish in a manufacturing company. Okay, so we have defined this. Now there are going to be two levels or two categories of a production system. So first level is called the facility. The facility is actually the factory and equipment in the factory, and how that is organized or laid out. So the first thing or the first level is that how in a factory you lay out your equipment and you make your plant layout. So this is number one. Second category में गया है कि you need to have a manufacturing support system. So you have laid out your plant, you have laid out your factory. So now you need to set the procedures. You need to set the procedures which are used to manage production. क्योंकि क्या था? आप एक production system चला रहे हैं. So इस system में you need to have certain set of procedure which should be able to manage your production, to solve your technical and logistics problems. किस चीज में? In ordering materials, moving work through the factory, ये वही चीजें आ गई जो हम यहाँ देख रहे थे, and ensuring that the product meets the quality standard. So ये वो manufacturing support system है which is going to ensure all this. कैसे? हम इसको भी अगली slides पे पढ़ेंगे. ठीक है जी? अभी हम इसको अगली slides में पढ़ेंगे. So ये ज़हन में रखिएगा कि what we need to have is that in a production system we need to have a facility, we need to have a hardware which is laid out as a plant, and then whatever we are going to do in our factory or in our facility or in our plant, that has to be supported by a manufacturing support system which has to set the procedures for managing production, technical and logistic problems to solve करना है. Then they have to order materials, move the work through factory, but still ensuring the highest quality standard. So this is how the production system looks like. So a production system would be a factory and a manufacturing. And these are two-way travel. So whatever facility you have in the equipment, so आप एक manufacturing support system से उसको support कर रहे हैं. Let's see, you are ordering the raw materials. मैं एक मिसाल लेने लगा. You are ordering the raw materials which are being ordered by the manufacturing support system.
but it has to have a feedback from the facility, from the factory, that I need raw material. Now, what would be a good manufacturing support system? That a good manufacturing support system would be to make the raw materials available in time. मैं सिर्फ अभी raw material की कहता हूँ, to make available the raw material in time. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है आपका, इट इज मॉनिटरिंग योर फैक्ट्री एंड मॉनिटरिंग द लेवल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स व्हिच आर प्रेजेंट एंड हाउ मच इज रिक्वायर्ड. सो ये आपकी इसके ऊपर फोरकास्टिंग और ये सारी चीजें इसके ऊपर होती रहेंगी. सो इस सपोर्ट सिस्टम का फायदा तब है व्हेन इट इज एबल टू गिव यू द रॉ मटेरियल्स इन टाइम. अगर ये नहीं करता, सो इसका मतलब ये हुआ कि आप कि रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी किसी एक टाइम पे खत्म हो जाएगी एंड योर मशीन्स विल बी आइडल. सो यू वोंट बी यूजिंग योर मशीन्स टू द फुल एक्सटेंट. ठीक है, ये मैंने आपको एक मिसाल दी. इसी तरह आप इसको हर चीज के ऊपर फिट इन कर सकते हैं. इफ योर मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम does not give you a high quality inspection, so your product will start going into waste. ठीक है, सो ये आपके सामने आ. प्रोडक्शन सिस्टम की जो फैसिलिटी है, प्लांट का लेआउट है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं. सो ये हमने ये इनके साथ मैंने यहाँ पे आप इसके मुताबिक बात जो है वो कर ली कि अभी प्लांट लेआउट कैसे होता है. इसको हम देखेंगे कि किस तरह के प्लांट लेआउट्स होते हैं, किस तरह के वर्क स्टेशंस होते हैं. ये जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं कि प्रोडक्शन लाइन कैसी होती है, स्टैंड अलोन वर्क स्टेशन या वर्कर्स कैसे होते हैं, या इनकी ग्रुपिंग कैसे की जाती है. सो हम इसके बारे में अभी बात करेंगे. ओके, अब ये वो आ गया आपके सामने कि मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो ह्यूमन पार्टिसिपेंट यानी कि वर्कर और मशीन का क्या कॉन्सेप्ट है. सो सबसे पहली चीज अगर आप देखें, सो हियर यू कैन सी दैट मैनुअल वर्क स्टेशन. A worker is performing one or more tasks without the aid of power tools. So this is without aid of power tools. So hand tools का. So this is manual workstation. Work machine system क्या है? A worker is operating a powered equipment. So इसका क्या मतलब हुआ? A worker may have a drill machine जिसकी मदद से वो एक सुराख निकाल रहे हैं. So एक powered tool आ गया आपके पास. ठीक है, एक वर्कर जो है उसके पास एक न्यूमेटिक बोल्ट ओपनिंग का जो वो सिस्टम है वो है. सो बजाय इसके कि वो पाना लेके या चाबी लेके उसको खोले, सो वो एक न्यूमेटिक टूल से उसको खोल लेते हैं. सो दिस इज वर्कर एंड मशीन सिस्टम, ये वाला. एंड देन देयर इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम. Nobody is involved, no human being is involved. Everything is being done automatically. So human involvement क्या रह जाएगी in an automated system? That it will be just a supervisor. He will just be a supervisor and he will be looking at the machine. But whenever the machine goes down, there has to be a skilled worker जो कि उस machine को ठीक कर सके. So ये manufacturing system की तीन categories हैं. So ये तीन categories जो मैंने आपको वहाँ पिछली slide पे दिखाई, ये उनकी graphical representation. That a worker is using hand tools. Then a worker is using a machine. This is the second system. And then there is no involvement of workers. So a periodic attention from the worker is required. Automated system machines हैं वो अपने processes किए जा रहे हैं. ठीक है? So these are the three categories of the of the workstations of an automated system. मैं मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम की तरफ आ रहा हूँ. सो मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम क्या चीज थी? विच हैड टू हेल्प द मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम. और उसने कैसे हेल्प करना था, ये आपके सामने वो चीजें नजर आ रही है. क्या? इट हैज टू ऑपरेट द प्रोडक्शन फैसिलिटी एफिशिएंटली थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल. एंड दैट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इज comprises of these four things. One is business function. So what does it have to see? It has to see the sales, marketing, order entry, cost and accounting and billing. So ये business function है.
then there has to be a research and development and design section which should make a product design. According to the product design, then there's some manufacturing planning which is to be done, and which will actually the planning would be that which processes will be done first, and it will be preceded by the another process, then the production planning and the capacity planning. Then is the manufacturing control. ये जितने processes मैं कर रहा हूँ जी. Any question? सर स्लाइड शेयर नहीं हो रही. I am at slide number 13. Are you able to see the slide? Not me, sir. आपको नहीं मिल. अच्छा, can somebody else tell me that is this slide number 13 visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, इसका मतलब है कि फिर थोड़ा सा आपके एंड पे गड़बड़ है. So if you can log in again, log off करके log in करें, अपना join करें, तो probably you will be able to see the slide. Okay, sir. Okay, so इसका मतलब है कि बाकी लोगों को नजर आ रही है. So there is some issue with you. Alrighty, so we keep moving forward and we talk about the manufacturing control system, manufacturing control. So whatever we had planned, whatever we have designed, then we had planned it, and now we are going to control it as per planning to have a manufacturing setup. अच्छा, ये वही चीजें जो मैंने अभी पिछली स्लाइड पे आपको दिखाई थी. So that is shown here in the form of a graphical manner, or उसकी ये pictorial representation. So the customer would give order to business function people. So from the business function people it goes to the product design. And देखिए इसमें product design में system facilities को भी देखा जाएगा. So यहाँ जो product design में जो लोग बैठे हुए, they have to be aware of the capability of their production system. So they should not make a design which cannot be manufactured. I repeat, so people sitting here should not make a design which cannot be manufactured. So people sitting here must know the capability of machines installed. Okay? Then the product design goes to the manufacturing planning. So what would the manufacturing planning people would do? So they will actually plan the process, plan the processes. So they should also have a knowledge of what is the capability of the facility. So it means ये देखें आपको यहाँ भी एक नजर आ रहा है. So they have to plan the process. अब देखिए ये मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल वाले आ गए. इसमें देखें 2 वे है. सो क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल वालों को पता होना चाहिए अपनी कि प्रोडक्शन क्या चल रही है, और प्रोडक्शन से एक फीडबैक भी इनको आ रही होनी चाहिए. अगर ये फीडबैक इनको नहीं आएगी, सो ये कंट्रोल एग्जीक्यूट नहीं हो सकता. So what they need to do is the manufacturing control people have to carry out these processes which are being planned, and then these are to be monitored also. ठीक है. और ये मैन्युफैक्चरिंग वाले जो हैं they remain in touch with the business function people also, जो कि कस्टमर से ऑर्डर ले रहे हैं. और ये बिजनेस फंक्शन का हमने कहा था कि ये रॉ मटेरियल्स, ऑर्डर, सप्लाईज, इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं. सो ये वो सेकंड हमने बात की थी कैटेगरी की, कि जो एक प्रोडक्शन सिस्टम को हेल्प करने के लिए आपका एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो मौजूद होता है. अब हम बात करेंगे कि ऑटोमेशन प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो कैसे हम उनको यूज करेंगे या कैसे उनको विजुअलाइज करेंगे. सम कंपोनेंट्स ऑफ द फॉर्म कैन बी ऑटोमेटेड एंड सम हैज टू बी डन मैन्युअली और क्लरिकली. सो ये अब डिसीजन है मैनेजमेंट का, जिसको हमने कहा था ना कि स्टेप वाइज प्रोग्रेसिवली. सो कौन सी चीज ऑटोमेट करनी है, कौन सी मैन्युअली रखनी. ठीक है. देन जो चीजें आपने ऑटोमेट कर ली उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया. सो ऑटोमेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम. ठीक है. ये जो 2 चीजें थी, सो इनको मैंने अपनी पहले फैक्ट्री को ऑटोमेट किया, फिर सपोर्ट सिस्टम को भी कंप्यूटराइज कर दिया. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, ये गौर से देखिएगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट.
इंपॉर्टेंट इन अ वे कि जो हमने ऊपर की दो कैटेगरीज की बात की है, दे ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है, क्योंकि जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम है, इट हैज टू बी कनेक्टेड विद योर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। जो हमने अभी आपको दिखाया था ना पिछली स्लाइड के ऊपर कि देयर इज अ टू वे ट्रैफिक between the manufacturing support system and the manufacturing system. So इन दोनों के दरमियान जो ओवरलैप है वो एक्चुअली दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय सिम, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। सो अब ये जितनी बातचीत हमने की है, अब मैं अगर इसको यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चोरियल फॉर्म में लेके आऊँ, सो सबसे पहले आपने देखा कि हमने एक प्रोडक्शन सिस्टम डिफाइन किया था, जिसको हमने कहा था कि उस प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम होगा और एक फैसिलिटी होगी। सो ये हमने दो डिफाइन किए। अब आप देखिए मैंने राइट साइड के ऊपर वी हैव computerized application and automation application. So the manufacturing system, if these are manufacturing support system, if controlled by computers, and the equipment is automated, again controlled by computer, so the whole system, this becomes computer integrated manufacturing system. So जो प्रोडक्शन सिस्टम है that is automated with the help of computer integrated manufacturing, which involves the potential computerization application for manufacturing support system and the potential automation of the factory and the equipment which are carrying out the production. So this is, the whole system is called computer integrated manufacturing system. ठीक है जी। सो ये सिम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बात करते हैं, या जो हम कहते हैं कि यार हम प्रोडक्शन सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी कंप्यूटराइज्ड या कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। एग्जांपल्स हैं कुछ, हम पहले भी देख चुके हैं, जस्ट अ रेपिटेशन, मशीन टूल्स हैं, ट्रांसफर लाइंस हैं, असेंबली सिस्टम्स हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन दीज, सो दिस इज जस्ट अ रेपिटेशन। अब मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आने लगा हूँ कि जो ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं, अब उनमें किस तरह की हम उनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस, वन इज फिक्स्ड ऑटोमेशन, द अदर इज प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन एंड थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब ये जरा इसको देखिएगा, ये तीन को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले देखिए फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या है। A fixed automation is a manufacturing system in which the sequence of processing operation is fixed by the equipment configuration. What does this mean? कि लेट्स सी अगर वो एक नट टाइट करने की मशीन है तो वो सिर्फ नट ही टाइट करती रहेगी। अगर वो कोई दो पार्ट्स को जोड़ने की चीज है जिसने ऐसे जोड़ के उसको वेल्ड करना है तो वो यही काम करती रहेगी। सो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड ऑटोमेशन। सो इसका मतलब है कि यू नीड टू हैव अ मशीन जो सिर्फ एक ही काम करेगी, यानी कि वो कस्टमाइज्ड मशीन होगी, सिर्फ एक ही काम करेगी। सो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड ऑटोमेशन। सो इसके टिपिकल फीचर्स क्या हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन के? इफ यू वांट टू गो फॉर हाई प्रोडक्शन क्वांटिटीज, सो फिक्स्ड ऑटोमेशन आप करें, बट फिक्स्ड ऑटोमेशन के लिए चूंकि आपके कस्टमाइज्ड इक्विपमेंट होगा, सो इट मींस दैट यू विल हैव अ हाई इनिशियल कॉस्ट। You can achieve very, very high production rates, but there will be inflexibility. So you won't be able to make a variety of product if you have a fixed automation. So you cannot have a variety of product. So ये fixed automation है। So just अपने ज़हन में लेके आइए कि लेट्स, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि एक मशीन है जिसे सिर्फ नट ही टाइट करना है तो वो नट ही टाइट करती रहेगी, उसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि वो कुछ वेल्डिंग करनी शुरू करे। सो दिस इज फिक्स्ड ऑटोमेशन। नाउ कम ओवर टू द प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। सो एक एंड फिक्स्ड ऑटोमेशन है और एक एंड प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है, तो ये दोनों एंड्स हैं, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या है? A manufacturing system which is designed with the capability to change the sequence of operation to accommodate different product variety or different product configuration. So this is programmable automation. So क्या कर सकता है? Change the sequence of operation and it can accommodate different product configuration. लेकिन इसके लिए क्या होगा?
अब इसके लिए आपको स्पेसिफिक या कस्टमाइज्ड मशीन्स नहीं चाहिए, ये जनरल पर्पस मशीन है. लेट्स सी, इट्स अ वेल्डिंग मशीन. सो एक वेल्डिंग मशीन है, ऑटोमेटेड वेल्डिंग मशीन है, इट कैन कैरी आउट एनी काइंड ऑफ वेल्डिंग. सो एक रोबोट है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट है, उसके आगे आपने एक वेल्डिंग टॉर्च लगा दी. So it can move in 6 degrees of freedom and it can weld anything in any orientation in 3D space. ठीक है. अच्छा, अब सिंस ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है तो इसके प्रोडक्शन रेट लोअर हो जाएंगे. सो सी यू हैव लोअर प्रोडक्शन रेट्स. बट इन कंपैरिजन टू फिक्स्ड ऑटोमेशन ये ऐसा नहीं है कि ये लो प्रोडक्शन रेट बिल्कुल ही कि जी मैं अब एक ही बनाना शुरू कर दूंगा पार्ट, ऐसा नहीं है. इट इज इन कंपैरिजन विद द फिक्स्ड ऑटोमेशन. इसके एडवांटेज क्या? इट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद द वेरिएशन एंड चेंजेस. सी, इट हैज द फ्लेक्सिबिलिटी. इट कैन बी यूज फॉर बैच प्रोडक्शन. बैच प्रोडक्शन क्या है कि मैं एक टाइप की चीज एक वक्त में बनाऊं. लेट्स सी, मैं स्टेपलर बना रहा हूं, फिर मैंने ये एक बैच स्टेपलर्स का बना लिया और स्टेपलर्स का बैच बनाने के बाद मैंने कहा मैं नेक्स्ट बैच के अंदर ग्लास बनाना शुरू कर दूं. ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू दैट आई कैन स्विच बिटवीन द जॉब्स, आई कैन स्विच बिटवीन द बैचेस. सो मैं एक वक्त में एक प्रोडक्ट और देन दूसरे वक्त में दूसरे प्रोडक्ट, जिसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है. तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू सेटअप, मुझे सेटअप चेंज करना पड़ेगा. ठीक है. I have to physically set up and change the part program. Since it's a programmable automation, so मुझे दूसरे पार्ट बनाने के लिए अपनी मशीन को प्रोग्राम करना पड़ेगा, अपनी मशीन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. So we have talked about two extremes: fixed automation, programmable automation. इनके बीच में क्या है? इनके बीच में we have flexible automation. ठीक है. Flexible automation क्या है? It is an extension of programmable automation in which the system is capable of changing over from one job to the next with no lost time. ठीक है. So this is in between programmable and fixed automation. इसके typical features क्या हैं? High investment cost as compared to customized engineering, customized system. Continuous production of variable mix of product. So कभी एक बना रहे हैं, कभी दूसरा बना रहे हैं. It will have medium production rates. यानी कि प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन से हायर होंगे प्रोडक्शन रेट, बट फिक्स्ड ऑटोमेशन से कम होंगे. बट एंड इट कैन फ्लेक्सिबिलिटी, इट विल हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद द सॉफ्ट प्रोडक्ट वैरायटी. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन हियर कि व्हाट इज सॉफ्ट प्रोडक्ट वैरायटी. सो अगर कोई सॉफ्ट प्रोडक्ट है इसका मतलब कोई हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी भी होगी. सो देयर विल बी अ हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी and there will be a soft product. मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन इसलिए करने लगा हूँ कि आगे इसको समझने में बहुत आसानी हो जाए. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टेपलर और मार्कर. देखिए इन इन दोनों में कितना फर्क है. सो दिस इज कॉल्ड हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी, ऑल टुगेदर डिफरेंट. इसके लिए आई नीड टू हैव अ सेपरेट प्रोग्राम टू द ऑफ द मशीन. प्रोसेसेस भी डिफरेंट होंगे और इसके लिए अ सेपरेट प्रोग्राम विल बी रिक्वायर्ड एंड प्रोसेसेस विल बी डिफरेंट. सो दिस इज कॉल्ड हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी. जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? बिकॉज इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. वैसे तो कोई मेरा ख्याल मुश्किल चीज नहीं है, बट स्टिल इफ यू हैव अ क्वेश्चन सो प्लीज आस्क मी. सो दिस इज द हार्ड प्रोडक्ट वैरायटी, अ स्टेपलर एंड अ मार्कर. Okay, if there's no question, so let me now shift towards soft product variety. So what I am now doing is that I'm putting in two markers in front of you. The only difference between them is the color. Shape, हर चीज same है, color different है. So this is called soft product variety. So ये flexibility है आपके पास. Blue marker बना लो. सर जी, किस पॉइंट पे आप कहेंगे कि दोनों के दरमियान ये डेफिनेशन चेंज होती है, sorry. सॉफ्ट प्रोडक्ट और हार्ड प्रोडक्ट? सर किस पॉइंट पे आप कहते हैं कि दोनों के दरमियान मतलब किस तक? क्या कोई इसका एक डेटम पॉइंट या कोई फिक्स पॉइंट हो सकता है? नो. जस्ट लुक एट दीज टू ड्राइंग्स.
ठीक है, इसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, इसके लिए डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मशीन, और इसके लिए बिल्कुल डिफरेंट। सो ये दोनों आपस में मैच नहीं करते। हाउएवर, एक स्टेपलर may be a little different from another stepler. ठीक है, सो क्या है कि जिसके अंदर मुझे कम से कम अपनी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़े, किसमें कि कंटिन्यूस प्रोडक्शन भी कायम रहे। ये देखें सेकंड पॉइंट, कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सेस ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं इन दोनों के दरमियान शिफ्ट करूंगा तो मुझे मशीन को बंद करके उसको रिकॉन्फ़िगर करके फिर चलाना पड़ेगा। इन दोनों के दरमियान में कैसे शिफ्ट हो सकता हूं? मैं ब्लू मार्कर बना रहा था और साथ मैंने कलर मिक्स करके ब्लैक मार्कर बनाना शुरू कर दिया, तो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा चेंज नहीं हो रही, सिर्फ जहां पे कलर्स चेंज होने थे वो वाला पॉइंट चेंज हो रहा। ठीक है, ये कुछ बात समझ आती है? Does this answer your question? Yes, sir. Okay, so that's great. So Yes, this sir. is hard and soft variety of the product. So अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और build up करता हूँ. Now look at this diagram. ये जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है. So what do you have here? You have the production quantity on the x-axis, and you have the product variety on the y-axis. So ये वो आपकी hard या soft variety है. This is your hard or soft variety. ठीक है, सो अब आप देखिए, हाई प्रोडक्शन यू नीड टू हैव फिक्स्ड ऑटोमेशन, सो इट मींस दैट यू विल हैव लो प्रोडक्ट वैरायटी। सो मे बी आई वुड से कि यहां पे वन ऑफ अ काइंड या वन टाइप ऑफ थिंग इज बीइंग मेड। ठीक है, सो वेरी वेरी लो प्रोडक्ट वैरायटी बट वेरी वेरी हाई क्वांटिटी। दूसरे एक्सट्रीम पे आ जाओ, so look at this programmable automation. So you will have high product variety, so it means that you can make hard product variety here, but it will have a lower production. And if you want to go with a soft product variety with a medium production, for medium quantity production, so you can have a medium product variety which is between hard and soft variety, which is between hard and only one type. So actually this medium product variety is the soft product variety. So let me just write it down here. So this is soft product variety. ठीक है जी। सो अब मेरा ख्याल में हमने अभी तक जो कुछ बातचीत की थी, जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट वैरायटी, क्वांटिटी, ये वो, सो नाउ यू कैन वेरी वेरी कन्वीनियंटली मेक आउट विद दिस डायग्राम कि हाउ देयर विल बी अ रिलेशन बिटवीन अ प्रोडक्ट वैरायटी एंड अ production quantity and what type of automations will be used for this. So I hope this is clear. So we move forward and we talk about manufacturing support system के objectives क्या हैं. So objectives are to reduce the amount of manual and clerical effort in product design. We have talked about it. We need to integrate the CAD and CAM, and SIM is something which is the which carry out the 4 basic manufacturing support system functions in addition to the computerization of all these products. ये हम पहले इसको देख चुके हैं. Why people go for automation? ये हम पहले बात कर चुके हैं. This is just the repetition, so we will not go into this detail. There is a question. Manual labor in production system. Do you think that while talking about manual automation, you still need a manual labor in your production system? What would be your question? What will be your answer? Do you require a Yes. Yes, sir. Okay. Yes, you need. Why? सर ह्यूमन टच की सर जरूरत होती है सुपरवाइजर, कुछ खराब होते हैं कहीं भी, Okay. एक So सुपरविजन के तौर you पर. need some people to make design for you. You need some people to
maintain the machines, you need some people to supervise your machines. So why they are required? So whatever manual operation in the factory is to be done, so you need a manual labor. Then you labor manufacturing support system की जो मैं बात कर रहा था कि उसके लिए आपको manual labor चाहिए, जो उन चीज़ों को ऑटोमेट, क्योंकि मशीन है उसको चलाने, उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करनी है, उस कंप्यूटर को मेंटेन करना है, कोई ऑर्डर्स करनी है, कोई रिसीविंग्स करनी है, उन सारों के लिए आपको चाहिए. However, your machine itself may not require a worker. It may only require a supervisor. बट उस मशीन को इंटीग्रेट करना, उसकी प्रोसेस प्लानिंग करना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसकी इंस्पेक्शन करना, दैट विल बी डन बाय द मैनुअल लेबर. सो यू कैन नॉट रूल आउट द मैनुअल लेबर्स. अब ये मैनुअल लेबर जो फैक्ट्री ऑपरेशंस में आपको रिक्वायर्ड हो सकते हैं, ये थोड़ा जस्ट ये कुछ मैंने यहाँ पे जॉट डाउन कर दी, और ये मैंने जॉट डाउन की है आपकी बुक में से. सर टास्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है जो मशीन नहीं कर सकती, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं. शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, सो मशीन लगाने की जरूरत नहीं है यार, इतनी डिमांड ही नहीं है. सो यूज द मैनुअल लेबर टू मेक समथिंग. कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है. अप्स एंड डाउन्स एंड डिमांड में मशीन तो प्रोड्यूस करती चली जाएगी, इंसान काम कर रहा है वो स्लो हो सकता है, तेज हो सकता है, ठीक है. प्रोडक्ट फेलियर का रिस्क कम हो जाता है, क्यों? बिकॉज आपके पास गुंजाइश है, फ्लेक्सिबिलिटी. Then last one is that you don't have the money to put in the automated machine, so well you will go with the manual labor. मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम में मैनुअल लेबर की क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ लिखी हुई है. डिजाइनिंग करनी है, इक्विपमेंट और टूलिंग है, प्लान करना है, उसके मेथड्स एंड राउटिंग्स, ये एक्चुअली प्रोसेसेस हैं. प्रोडक्शन मेथड्स एंड राउटिंग्स, ये जो है प्रोडक्शन मेथड्स एंड राउटिंग्स, ये एक्चुअली प्रोसेसेस हैं. प्रोसेस प्लानिंग है, दिस इज प्रोसेस प्लानिंग. ये प्रोसेस नहीं है, इट इज द प्रोसेस प्लानिंग. देन इक्विपमेंट मेंटेनेंस, प्रोग्रामिंग है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट वर्क, प्लांट मैनेजमेंट. तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट सिस्टम में मैनुअल लेबर से ये चीज लें. We are going towards the end of our now lecture, so we will talk about some automation principles and the automation strategies, and then some migration strategies. So what is USA principle? So this is called U is for understanding the existing process, simplify the process, S stands for simplify the process, and automate the process. So this is actually the sequence. So whenever you are talking about, you are thinking about automation, so you need to understand the existing process first. कि यार process क्या है, फिर उस process में से you need to simplify that process by reducing the unnecessary steps, which reduce the unnecessary steps which might not be required. So until you you understand the process, you cannot carry out this simplification. And when you are done with this, then you can go with the automation. And automation maybe you need to go through these 10 migration, 10 strategies and then migration strategy. So हम इन दोनों के बारे में अभी बात करते हैं कि what are those 10 strategies. So understand the existing process, उसको simplify कर लें, then go into the automation process through these strategies for automation and migration. ये 10 strategies. So these are taken from your book. Each strategy has 3 to 4 lines of explanation in the book. So I would request you to please go back home, open up your book, give it a read कि वो 10 strategies हर एक के साथ क्या क्या linked है. So हर ये जो headings है इसके साथ 2-3 lines जो है वो नहीं है. So I would request you all to please go through those lines so that you can very well understand that what we are talking about in these 10 strategies of automation and process improvement. ठीक है. माइग्रेशन कैसे होगी? देखिए हमने पहले बात की थी कि माइग्रेशन वुड ऑलवेज बी इन स्टेजेस. एकदम से आपने क्वांटम लीप या एक टेक्नोलॉजी का लीप नहीं लेना. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर. So what would be your phase 1?
Let's see, phase 1 is manual production. So you have a single station manned cells working independently. स्टेशन है, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं. एडवांटेज क्या है? इट इज क्विक टू सेटअप एंड लो कॉस्ट. ठीक है, बट मैनुअल सिस्टम है, मैनुअल प्रोडक्शन. सेकेंड फेज क्या है? ऑटोमेटेड प्रोडक्शन. अब आप क्या कर रहे हैं? सिंगल स्टेशन है बट दे आर ऑटोमेटेड सेल्स. अगेन दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली. सो आप क्या कर रहे हैं? आप लेट्स सी, मैं अगर एग्जांपल दूंगा कि यू हैव अ लेथ मशीन एंड अ मिल मशीन. दोनों इंडिपेंडेंट काम कर रही थी, मैनुअल काम कर रही थी. एंड देन यू थॉट कि यार लेट्स ऑटोमेट माय मशीन्स. सो आप कहते हो यार ज्यादा वर्कलोड कौन सी मशीन का है? लेट्स सी, लेथ का ज्यादा वर्कलोड है. तो आप कहते हो यार लेट अस ऑटोमेट लेथ मशीन फर्स्ट. सो आपने लेथ मशीन को ऑटोमेट कर लिया. वहां से आपको ये लगा कि यार अब मेरी प्रोडक्शन बढ़ गई है और मुझे नजर आ रहा है कि यार मेरी डिमांड भी ग्रो कर गई है. सो मैं कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू नाउ ऑटोमेट दी मिलिंग मशीन ऑल्सो. तो मैंने दोनों को इंडिपेंडेंट ही काम कर रही हैं दोनों मशीन्स, बट उनको मैंने ऑटोमेट कर दिया. सो ये क्या करेगी? ये ग्रोइंग डिमांड को कैटर फॉर करेगी. Now automated integration system. Then now I have a multi-station system with serial operations and automated transfer of work unit between station. So इसका मतलब क्या हुआ कि I have, मैंने वही दो मशीन्स जो थी उनको मैंने अब मल्टी स्टेशन के तौर पे देखा. सीरियल ऑपरेशन का क्या मतलब हुआ कि पहले एक ऑपरेशन होगा फिर दूसरा ऑपरेशन होगा. सो अब ये प्रोसेस प्लानिंग आ गई कि पहले लेथ का ऑपरेशन होगा फिर मिलिंग का ऑपरेशन होगा. ठीक है, सो ये प्रोसेस प्लानिंग आ गई. देन देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ वन फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. सो रॉ मटेरियल आया लेथ के ऊपर. लेट मी जस्ट इफ आई पुट इट हियर. सो आई हैव टू मशीन्स, मशीन नंबर 1, machine number 2. So the raw material came here. So raw material came here. यहाँ पे इसके ऊपर प्रोसेस हुआ. Then it went to machine number 2. और ये क्या है? ये जो मशीन है ये ऑटोमेटेड ट्रांसफर है. This is automated transfer. Then the second operation was carried out and then I have a finished product here. ठीक है, सो ये दोनों इंटीग्रेट होगी. लेकिन अब इनके अंदर ये प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस प्लानिंग है. ये ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि मैं मशीन नंबर 2 का ऑपरेशन पहले करूं और मशीन नंबर 1 का बाद में करूं. नो, व्हाटएवर प्रोसेस प्लानिंग इज बीइंग डन, सो आई हैव टू गो विद दैट प्रोसेस प्लानिंग. सो दिस विल गिव मी मोर प्रोडक्शन और ये मल्टी स्टेशन सिस्टम बन जाएगा. अब मैंने कैसे अपने आप को वो करना है, मैं इंटीग्रेट करना है. सो देखिए अगेन ये आपको यहां पे टाइम नजर आ रहा है ऑन द एक्स एक्सिस और यहां पे प्रोडक्ट की डिमांड नजर आ रही है. सो जस्ट सी, फेज 1 क्या था कि मैनुअल वर्क स्टेशंस, मैनुअल हेल्पिंग पीपल. सो वर्कर इज वर्किंग ऑन अ मशीन हियर. ये वर्कर मटेरियल को हैंडल कर रहा है, एक जगह से उठा रहा है दूसरी जगह लेके जा रहा है. इंडिपेंडेंट ये काम कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज फेज 1 विच इज मैनुअल प्रोडक्शन. फेज 2 में क्या है? मशीन ऑटोमेट हो गई, मटेरियल हैंडलिंग इज स्टिल मैनुअल. सो दिस इज ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लेकिन वन सेल मैन्युफैक्चरिंग. थर्ड देखिए कितना है मजेदार चीज. यू हैव all the stations automated, then automated transfer. बेल्ट के ऊपर एक चीज चलती जा रही है और उसके ऊपर काम होता जा रहा है, नो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट. सो दिस इज फेज 3. सो अगर मैं इसको रिलेट करूं विद द प्रोडक्शन, सो दिस विल हैव अ लो प्रोडक्शन, दिस विल हैव अ मीडियम प्रोडक्शन and this will have a high production. ठीक है जी. सो ये जो हमने स्ट्रेटजीज की बात की, जिनको हमने लिंक किया,
कि किन phases में these should be done. So यहाँ पे आपको वो एक pictorial graphical form में यहाँ नजर. So that is all for this lecture, and I hope कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं होगा. And when you go back home and you will give it a read, so you will understand it more, और आपको reinforcement अच्छी मिल जाएगी. So जी, any question? If you have any question, so please ask me, and if there is no question, then we can discuss our assessment system also. जी, कोई सवाल यहाँ पे? No, sir. Okay, so that's great. So let me just switch the recording off so that